Hello friends, good evening and welcome to, or good day and welcome to Dr. Poonam's vlog. I'm Dr. Poonam Sambhaji from Goa, North Goa, Porvorim. And today's my question will be by, where is that, Flona Fernandez. Okay, so let me read the question from my Google form. Okay, so Flona says that my baby is 3.5 years old and she has recently started stammering. Will it resolve on its own or any treatment is required? And the second question she has asked is, please give me tips for stopping bed wetting at night. So Flona, your first question regarding stammering, I will make a separate video on that later. But today I'm going to address the issue of bed wetting, which is asked to me even by few more people. So I don't remember the names, but many more have asked. And if you are one of the person who has asked me the question, please write in the comment section that yes, I had asked this question. At the same time, let me tell you, I'm trying to some experiment today because I have multiple requests coming requesting me, Doctor आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए. So today's video I'm going to split into English and Hindi. Let me know how the experiment was so that next time even I can do something like this. If you don't like it, so next time I will make separate videos. Okay, so let me start with the question of bed night wetting. It is called enuresis in our language, ENURESIS. Okay, so that is the nighttime bed wetting. Now nighttime bed wetting is okay till certain extent, and after certain age it should go on decreasing. And night bed wetting is usually expected to be there till the age the child is around 5-6 years. We expect the child to do bed wetting at night time, but over time, by around 2 years or by around 3 years, maximum percentage of children will usually stop doing the bed wetting and they'll be dry throughout the night. But it is not so for many more children, or a big chunk of children. Even 15% of children may continue to do the night wetting of the bed even after the age of 3 years till around 6 to 7 years, and beyond 7 years the percentage goes on decreasing till about 12 years, 13 years. Beyond 14 to 15 years, the child should not be wetting the bed, and if they are doing so, they require proper examination and treatment. So is the same for a child who is around 5 to 6 years. You should seek medical help if they are still wetting the bed. Now during this time, that is between the age of 3 to 5 to 6 years, what is it that you can do at home without much so-called medicines, the measures that you can take. Okay, so we will talk about that in short while. Now let me start my Hindi recording. So जब छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के बाद उनका रात में जो सुसु करना रहता है, सो आज का हमारा वीडियो है कि बच्चा अगर 2 से 3 साल के बाद भी रात में बिस्तर गीला कर रहा है तो आप क्या करोगे. तो यूजुअली 2 से 3 साल के बाद बहुत से बच्चे रात में सुसु नहीं करते, बट ऐसे बहुत सारे होते हैं, 15% बच्चे रहते हैं जो सुसु कर सकते हैं रात में भी बेड में. ओके, सो उन बच्चों के लिए हमको जब तक वो 5 से 6 साल के नहीं होते, हमको जरा एडजस्ट करना है, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी करनी है ताकि उनको हम ट्रेन करें कि वो रात में जो बिस्तर है गीला नहीं करे. आज हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे. और ये जो हिंदी वीडियो है मेरा, मैंने हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल किया है एक एक्सपेरिमेंट के तौर से. आप मुझे बताइए अगर आपको ये अच्छा लगा, और मैं हर एक इंफॉर्मेशन जो इंग्लिश में दूंगी वही मैं थोड़ी देर के बाद हिंदी में दूंगी. तो ये वीडियो में बीच में इंग्लिश, बीच में हिंदी, बीच में इंग्लिश, बीच में हिंदी होगा. और मैं टाइम स्टैम्प रखूंगी कि हाँ अभी हिंदी शुरू हो रहा है, अब इतने टाइम तक हिंदी रहेगा. तो जो हिंदी में देख रहे हैं आप वो टाइम स्टैम्प देख रहे हैं, एंड दोज पीपल हु आर वाचिंग इन इंग्लिश कैन सी द टाइम स्टैम्प इन इंग्लिश. सो आई विल राइट इट इवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. डू टेल मी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज. ओके, नाउ शिफ्टिंग टू इंग्लिश. So now when the baby has the bed wetting, first and foremost you have to remember in your mind that bed wetting is okay till the child is 6 to 7 years, and you have to start training them. 5 to 6 years, sorry, and you have to start training them. Now how are you going to train them? So first is that the general measures that you are going to take attention into, okay, or take more interest into the general instructions. Now what are these general instructions? First thing is that they have to do
regular voiding in the daytime. So see to it that the child visits the loo or goes and sits on the potty seat for passing susu at least once in 3 to 4 hours. Whether they want to pass the urine or no, let them go and sit on the potty seat, okay, or sit on the toilet, rather not the potty seat, sit on the toilet, so that they excrete all that urine and they do not get used to having a big volume of urine in the bladder. Okay, the second thing is that they have to pass urine before they go to bed, that is night time. If the baby is going to sleep at around 9 o'clock, by 8 o'clock and 8:30 they have to go to the loo and pass the urine, so that they have emptied the bladder before going to sleep. Also, try to decrease the amount of sugary drinks that they are taking or sugary food, because increase in sugars can itself can increase in the passage of urine, or they start passing urine more often when they take lot of sugar. So decrease the sugar intake. Now the last one in this is that you have to start dividing the water intake throughout the day. Now, if a child who is around 2 to 3 years may take around 1.8 to 2 liters of fluid in a day, that is water intake or fluid intake in a day will be around 2 liters. For ease of calculation, we'll take it as 2 liters, okay. So they may drink 1.5 to 2 liters. So 2 liters is a little bit on a higher side, but considering even the bigger children whose parent might be listening this video, I'm saying 2 liters. So now when the water is around 2 liters, 40% of these should be taken in the morning time, somewhere around from 6 a.m. to 12 p.m. you can say. Then the rest 40% should be taken from 12 p.m. to 5 p.m. or 6 p.m. you say. Okay, and then the rest 20% should be taken from that 5 to 8 p.m. and beyond that you should not give any water. Now let's calculate this into the mLs of water. So if your child is going to drink 2 liters of water in a day, so divide it into these many chunks, that is 40% of 2 liter is 800 ml. So 800 ml between 6 a.m. to 12 p.m. Then another 800 ml from 12 p.m. to 6 p.m. And then the rest 20% that comes to around 400 ml you are going to take in the evening time, the night time from 6 p.m. to 8 p.m. Beyond 8 p.m. zero intake of water should be there, so that you can decrease the chances of night time bedwetting. Okay, so these are the general instructions. अभी हम हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं. तो बच्चे को अगर आपको रात में बिस्तर गिले करने से कम परसेंटेज करनी है, यानी उसको कम बार वो रात में बिस्तर गिला करे, तो आपको थोड़े जनरल केयर लेनी है, थोड़ी चीज़ें करनी है, हर रोज़ करनी है. उनमें से थोड़ी ये 4 चीज़ें मैं जो बताऊंगी वो अभी है. एक तो है कि उसको दिन भर में हर एक 3 से 4 घंटे में सुसु करने के लिए बाथरूम में भेजना है, तो उसको बाथरूम जाने दीजिए, वो सुसु करने दीजिए और बाहर आने. हर 4-4 घंटे में आप भेजोगे तो क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पर हमारा सुसु पूरा इकट्ठा होता है ना, वो जो बैग रहती है पेट में सुसु की, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी और बच्चे को एक आदत लग जाएगी, यहाँ तक अगर मेरा सुसु का प्रेशर हो तो मुझे जाना है, सुसु करनी है, तो वो आदत लग जाती है. दिन भर में आप हर 3 से 4 घंटे में उसको सुसु करने के लिए भेजिए. दूसरा है, रात में जब बच्चा सोएगा तो रात में सोने के पहले 1 घंटे पहले आप उसको 1 या 2 बार सुसु करने के लिए बाथरूम में भेजिए. ओके. तीसरा है कि दिन भर में ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करनी है, यानी ज़्यादा शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ज़्यादा अगर मीठी मीठी चीज़ें खाएंगे तो ज़्यादा सुसु होती ही है, तो उसके लिए शुगर कम खाइए. चौथी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पानी आप दिन भर में पीते हैं या फिर जो लिक्विड आप दिन भर में पीते हैं उसको डिवाइड करना है, उसको दिन भर में इस तरह से देना है. अगर हमारा बच्चा दिन भर में 2 लीटर पानी पी रहा है, हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 2 लीटर बोल रही हूँ, जितना भी पानी आपका बच्चा पी रहा है और कितना पानी पीना है उसका एक वीडियो मैंने पहले किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, या फिर कभी ना कभी तो वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिए. सो फॉर दैट आपको फॉलो करना है डॉक्टर पूनम्स व्लॉग. ओके. तो जब दिन भर में अगर बच्चा 2 लीटर पानी पी रहा है तो उस 2 लीटर में का 40% सुबह 6 से दोपहर 12 तक जाना है, बाकी का 40% दोपहर 12 से शाम को 6 बजे तक जाना है, और बाकी का 20% पानी शाम 6 से रात को 8 बजे जाना है. अभी हम उसको ml में कन्वर्ट कर देंगे. ml में कैसा है कि अगर 2 लीटर का 40% होता है 800 ml, सो 800 ml यानी 4 ग्लास बच्चा सुबह 6 से लेके 12 बजे तक लेगा, बाकी के 4 ग्लास दोपहर में
12 से शाम 6 तक लेगा, और बाकी के 2 ग्लास यानी 400 ml जो बचता है वो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ले सकता है, और 8 बजे के बाद उसको कोई भी पानी पीने के लिए नहीं देना है, जितना हो सके नहीं देना है, और सोने से पहले तो सुसु करवाना है। ओके, इससे क्या होगा कि बच्चे को एक आदत लग जाएगी, उसके ब्लैडर को भी, एक ब्लैडर यानी जहाँ पर सुसु इकट्ठा होता है उसको भी आदत लग जाएगी, इस टाइम पे हमको सुसु करना है। ओके, सो ये हो गया मेरा हिंदी। अभी इंग्लिश, अब थोड़ी देर के बाद हिंदी फिर से शुरू होगा। अभी आते हैं हम कि मोटिवेशन। नाउ वील कम टुवर्ड्स द मोटिवेशन ऑफ द बेबी, मोटिवेटिंग देम टुवर्ड्स नॉट पासिंग यूरिन इन द नाइट टाइम. Remember, scolding, nagging, insulting, or punishing them will not help you. You should not do that, okay, because it is going to give a negative feedback. You should motivate the child. So motivation should start around 4 to 5 years of child. Okay, beyond that you start motivating them. I would say 5 to 6 years of child, start motivating them. Now how do you motivate them? First, motivate them for passing the urine before they go to bed. Okay, so if they have passed the urine, congratulate them, give them stars. Do not give them sweets or some physical things. Okay, very often give them stars. Make a star chart. So you can just make a chart, write the date and whether they were wet on that day, whether they passed urine on that day, and the second column would be whether they passed urine in the bed, and the third column would be a star column. So you, in the stationaries you get these red star, green stars and all those stars. Okay, so if the baby passes urine before going to bed, give them a star for that. Okay, so total in a whole month, see how many times the baby actually went to pass urine, and if the baby passes urine on their own without you telling them, give them 2 stars. Okay, so that way you are motivating them, you're giving them stars. You can buy maybe golden stars, shimmering stars, colorful stars, what the baby likes. You know, they get so excited with those stars. Okay, and then the next step would be when he or she starts passing urine every day before going to bed, then you're going to start rewarding him for not passing, him or her for not passing urine throughout the night. So first few times there will be accidental passing of urine, there will be wetness, but then do not scold at them. So then you start counting, giving the stars for passing urine in the before the baby goes to sleep, as well as passing not passing urine during the sleep time, so not wetting the bed. And at the end of the month you can calculate the stars. Maybe each star accounts for 1 rupee, 2 rupee or 10 rupee, whatever you want, and the accounted the cumulative, you are going to give some physical gift at the end of 1 month. Okay, so that is the motivation. So अब हमारी हिंदी रिकॉर्डिंग करते हैं। जब बच्चा 5 से 7 साल का होता है तब आप रिवॉर्डिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। रिवॉर्डिंग सिस्टम यानी आप बच्चे को कुछ तो पॉजिटिव रिव्यू देंगे। बच्चे को आप कभी भी डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पनिश नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, उसकी दूसरों के सामने बताइए कि वो रात में सुसु करता है, अभी भी इतना बड़ा हो गया। नो इंसल्टिंग देम। ओके, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम यानी जब पहले तो रिवॉर्ड सिस्टम तब शुरू होगा जब बच्चा रात में सोने के जाने से पहले सुसु करेगा तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, और स्लोली जब बच्चा खुद ही जाके रात में सोने से पहले सुसु करेगा आप उसको डबल रिवॉर्ड दोगे। और जब दूसरा रिवॉर्ड तब होगा जब बच्चा रात भर में सुसु नहीं करेगा, सो नाइट बेड वेटिंग नहीं करेगा। वेट 2-3 मिनट्स। ओके, सॉरी। ओके, रात में बेड वेटिंग नहीं करेगा तब आप उसको दूसरा रिवॉर्ड दोगे। अभी रिवॉर्ड जो है फिजिकल नहीं रहना चाहिए, रिवॉर्ड सिस्टम रहना चाहिए। जैसे स्टार्स देंगे आप, कलरफुल स्टार्स, शिमरिंग स्टार्स, बहुत टाइप के स्टार्स मिलते हैं स्टेशनरी में आजकल। तो बच्चे को जो अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत मोटिवेटिंग लगता है। तो अगर वो दिन भर में रात में सोने से पहले आप सुसु करता है, आप उसको 1 स्टार दोगे। अगर खुद जाके, यानी आपने बताया भी नहीं, फिर भी जाके उसने सुसु किया रात में सोने से पहले, तो आप उसको 2 स्टार दोगे। तो उनको बहुत उसकी दे फील इट वेरी नाइस। ओके, उनको बहुत अच्छा लगता है। और बाद में आप क्या करोगे कि जब वो रात में सोया है और रात में उसने बेड गीला नहीं किया तो आप उसको एक्स्ट्रा स्टार्स देंगे। अब 1 महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, आप ये सारे स्टार्स ऐड करोगे और हर स्टार का आप एक कीमत रखिए, जैसे 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको चाहिए। और उस कीमत की जो भी फिजिकल आइटम रहता है, कोई खिलौना रहा, कोई एजुकेटिव आइटम रहा, कोई अच्छा बुक रहा, स्टोरी बुक, वो वैसी चीज़ आप बच्चे को गिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया उसका रिवॉर्ड सिस्टम। ओके, तो रिवॉर्डिंग दैट इज द मोटिवेशन जो मैंने बोला। अभी ट्रीटमेंट जो होती है
8-9 साल के बाद, या फिर अगर बहुत ही बुरा हाल है बच्चे का, कभी दिन भर में सुसु यानी रात भर में कभी सुसु उसने ऐसे हुआ ही नहीं कि नाइट टाइम ही हैज नॉट वेटेड हिज बेड, देन यू हैव टू गो एंड विजिट द डॉक्टर। बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो तो भी ये रात में सुसु कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं तो वो भी देखना है। ओके, तो उसके लिए तो डॉक्टर की असेसमेंट चाहिए। जो मैंने आज बोला, वॉट एवर आई हैव टोल्ड टुडे इज अ बेसिक स्केलेटन ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपको जो घर में करना है उसकी मैंने आज इंफॉर्मेशन दी है। आई होप आपको मेरा हिंदी इंग्लिश डुअल वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट में लिखिए, ताकि मैं सेपरेट वीडियो कर सकूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव अपॉन माई टाइम, कि दो वीडियो करने से अच्छा है कि एक वीडियो में सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगता है वेरी गुड, अगर अच्छा नहीं लगता है मैं दूसरा वीडियो कर दूंगी। ओके, एंड बीच बीच में यहाँ पर जहाँ पर इस एरिया में आपको कोई ना कोई तो पॉपअप्स दिखेंगे, वो भी वीडियो जाके देखिए। डू सी दोज वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज दोज आर ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। फॉलो डॉक्टर पूनम्स व्लॉग so that you get more and more information. Bye bye, thank you.